We have a camera, and y'all are only going to look better with people out here. नहीं तो ऐसे लगेगा कैमरा में कि कोई आया ही नहीं है शो पे. What's the point? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ. Vivian, is the volume okay? Yeah. Because I feel like it's a little too low. That's why. चंदू थोड़ा बढ़ा देना. Check. अरे perfect. Hello everybody, how are we doing? Settle in. We have a few more people. It's a very small crowd today, but we've got a few more people coming in. So, hi? Hey. We'll try that again. Hi? Hi. Much better. My name is Ash Malhotra. Welcome to Habitat Studios. I will be your host for today's poetry open mic. How are we doing? It's a Sunday afternoon. बारिश में तुम लोग आए हो. कितने वेले हो तुम लोग? We've given up our sleeps. Y'all have given up sleeps. Yeah, bro, same. We'll take a break right now. Wait for 2 minutes. Sir जी का phone call खत्म होने दो. हो गया? Important था. Someone's coming. Someone's coming for you. A friend, poet, Friend. coming to support you. Yeah. It's okay. What's your name, sir? Ronit. Ronit. Don't worry. I'm not going to send you until your friend comes. Yeah. So don't worry about that. Cool. What do you do, Ronit? I'm doing CA right now. CA final बचा है. You're still doing your CA. How many? You've not given an attempt yet, basically. CA final का attempt बचा है बस. बाकी दोनों हो गए. You crossed it. Inter I've done. So my articleship is going on right now. Articleship क्या होता है? It's basically internship in simple terms. So we have to do this for 2.5 years. Yeah. आप CA से पूछोगे ना, they never become a CA. I'm doing CA right now. They never become a CA. Either exams दे रहे होते हैं, internship कर रहे होते हैं. अरे तुम लोग का क्या है? तुम लोग CA कब बनते हो? CA कब बनते हो? To be in finals. Yeah, that's true. How old are you? I'm 20 right now. You look, yeah. Guys, round of applause. 20 पे final कर रहा है. Round of applause. How smart are you, bro? Where are you studying CA from? I'm going from Mumbai only right now. So I'm doing my articleship from Dhruva Advisors in Lower Parel. And where did you study? So basically, I was from Indore. So for my articleship, Where did you study? tuitions you're asking or college or anything? Where did you pursue CA? Like you have to study that, right? Somewhere. Indore. Indore only. Where you have a college? How does it work? No, so in this you have your tuition classes. College is just for BCom side में करने के लिए. अच्छा ये बीकॉम तो छेड़ है यार. हम बीकॉम मेन कर रहे हैं. ये बीकॉम साइड में कर रहा है. तो वो उसका सिर्फ ट्यूशंस रहता है and after that ट्यूशंस के उससे you give the exam. That's good. Have you come to a poetry open mic before? I have not come here but I have been to other open mics in Going Indore. on. Not In Indore. So Bombay first one. Yes. A round of applause. Bombay first open mic. तो आप इंदौर से इंटर्नशिप करने आए हो. ऐसे नहीं कि सिर्फ हैबिटेट के लिए आए हो. Yes, yes. हाँ ओके गुड. क्योंकि नहीं लोग आते हैं यार. Have like इतनी वैल्यू है इस प्लेटफॉर्म की which is very good. People come from Delhi and Rajasthan and all just for a 4-minute slot out here. वो लोग सुबह ट्रेन से आते हैं. सुबह 7-8 बजे फिर शाम को परफॉर्म करके निकल जाते हैं. So yeah, sorry I assumed. How many of you guys have come to a poetry open mic and Habitat before? Raise your hands. Everyone's come. Ma'am, you have never come. What's your name, ma'am? Prerna. Prerna. And what do you do? I'm a dentist. Dentist. Yeah. मत देखना मेरे दांत. मेरे बहुत बुरे हैं. Where do you practice, ma'am? Oshiwara. Just a fun fact. I'm from South Bombay. So anything beyond the ceiling is alien for me. Like Bandra के बाद ओशीवारा कहाँ पड़ता है? Andheri West. अंधेरी कहाँ पड़ता है? सच बता रहा नहीं हूँ. पता. सच बता रहा हूँ. मुझे बैंड्रा के बाद जनरली मुझे तो जो स्टेशंस होते हैं ना सब बोलते हैं. मुझे बैंड्रा के बाद कुछ नहीं पता. मुझे पता है वर्ली के बाद बैंड्रा आता है बस. Bandra के बाद जुहू आता है, I guess so. And जुहू के बाद See, people that live out there also don't know. You can't blame me then, ma'am. It's been only 4 months. It's been 4 months. Where are you from, ma'am? Are you from Bombay? You're from Bihar. And did you move to practice? Yeah, to practice and to gain some of the things I've been trying to do. क्या क्या करना चाहते हैं आप? क्या पता कल होना हो यार बताओ. Okay, so I want to be anchoring. You want to be anchoring? वो तो शिप का होता है. अरे, Sorry, bad jokes. So a little bit, I love lame jokes. yeah. I love cracking them, dude, because everyone just like cringes, right? तो वो नज़ारा बहुत मस्त होता है. I didn't cringe because you yourself doing that. Yeah, I know, it's fine. Prerna, how long have you been in Bombay for? 4 months. 4 months. And how are you liking it so far? Pretty fast. Pretty fast.
What is the main difference you find between Bihar and Bombay? See, the life is same. Things happen the similar way. Like people have their own thoughts and everything, and boxes are there. But that's people have boxes over here also. Boxes of thoughts I'm talking about. Yet everything that happens over here is very quick, and over there if something happens, people talk about it for 2-3 months. Over here, if something happens, the next day there is nothing. Wow, that's fact. How many of you guys are from Bombay? Okay. That's great. I'm like 2 woos and 5 people are like, yes. Me too. That's great. And have you been writing for a while? Are you performing? Sorry, first let me ask you that. Are you performing? I've performed once before Huh. at Antisocial, and then I'm here. That's nice. That's nice. And this is just your second open mic ever. Right. That's good. And how do you how did you start performing? Like, what made you become a writer? I used to write since very young age. When I started to put words together from that age. Arey, matlab, like, as soon as you said your first word, you're like, "Mummy, paper lao." Not मेरा दिल paper, टूट गया है. Not paper. So दिल टूटना जरूरी नहीं है. हाँ, I know. So what happens is you're learning, right? And you can make it into poetries and learn it better, easier. That's a beautiful thought. Because like even when I used to, I was a horrible kid at school. Like even in behavior, even in studies, everything. But a lot of people used to say you're an attention seeker, you're an attention seeker. like हाँ ठीक है career बनाते उसका. और मैं यहाँ स्टेज पे कर रहा हूँ. तुम लोग ने पैसे दिए मुझे सुनने के लिए तो great. So even when I was when I was giving like my SATs and all of that like standardized test thing, how I used to learn English के जो section होता है ना वो बहुत tough होता है. मैथ्स का तो ठीक है यार आई लव मैथ्स तो इंग्लिश का जो सेक्शन होता है वो बहुत टफ होता है तो हाउ यूज्ड टू लर्न मीनिंग्स एंड ऑल ना सेम वे आई यूज्ड टू पुट इट इनटू अ सॉन्ग लाइक फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल बिकेम pragmatic like something like that I just put in a song वो आसान हो जाता है you know to kind of just understand and that's beautiful beautiful. And I remember 2002 में या 1 में there was a tsunami. Hmm. It was very bad. And that made me write my first story and a poem together. So that's where I started getting into college magazines and If you don't mind me asking, School magazine. how old were you in 2001, 2002? If you don't mind me asking. Don't answer, it's I fine. would have been 4-5 years old. And तभी सुनामी पे लिखा है. कि माँ सुनामी कैसे आती है? This is माँ सुनामी कैसे आती है? Round of applause. What is this? जब मैं 4 साल का था, जब मैं 4-5 साल का था, मैं बस देख रहा था how does my nose taste? Like I was just seeing that. one of those things was this. One of those things is this. Dude, I don't even. So I started talking very late. So my mom always says you started talking at the age of 5, and you're making up for the years lost now. You talk a lot. मैम हाँ बोल रही है. दिख रहा है. Hi ma'am, what's your name? My name is Digna. Digna. And what do you do, ma'am? I'm a theatre artist. Theatre artist. What production, acting? Acting. And have we seen you in something before? Like, you mean you've seen me before? Like, I mean, I'm asking, have you done any plays Yes. recently? Yes, yes. Oh, I've could been you? performing for like 9-10 years. 9-10 years, ma'am. That's very nice. And where do you perform, ma'am? All over India. But All over India. yeah, all over India. We travel a lot with our troupe. Which troupe you? Gillo Gilari. आप कर लो. हाँ मैं भी crowd work थोड़ा करने दो. Just kidding. That's okay. I didn't mind that. So that's really nice. And how long have you been writing for? Say 9-10 years. 9-10 years. Yes, 9-10 years. Writing since 2000 or 2002. You're doing CA finals at the age of 20. मैं क्यों बकचोदी कर रहा हूँ यहाँ पे? छोड़ो यार, शो शुरू करते guys. What am I doing in life? Firstly, thank you so much, ma'am. Nobody asked the host that. मैं सब as a host, I ask everyone, I talk to everyone. Nobody asks me यार, and I feel a little left out. But thank you, Prerna. What do? I work in digital marketing. I do social media. I get paid to upload Instagram stories. Not my own. I do it for clients. I'm not that big yet where people are paying me to upload shit on my Instagram. I upload shit on other people's Instagram. And I do this, yeah. I perform every week. I don't get money from it, so that's why I need to have a job. Because poetry, who's going to pay? What to do, yeah. Like, you know,
the best because we don't get paid much as artists. It's a sad thing. So the only thing that's important is validation, and I always believe that validation is the best form of currency for an artist. I mean, but the only thing that sucks is I can't go to a waiter and be like, "Bhai, paise nahi hai." But tu na, must dikh raha hai today. I can't go and tell him that. Service 5-star. तो any clue? I वो नहीं कर सकता. That's why I have to have a job so that I can tell the waiter like, "You're looking great, but." ये ले. So, are we ready to begin the show? Yeah. I'm not going to begin like this. Are we ready to begin the show? Yes. So, before we start, I'm just going to go over a few rules. Every artist has 4 minutes to perform. The timer is there. You can see. Turn around. There's a timer there. You can see. The light will flash twice. One at 3 minutes 30 seconds. So, if you can see the light behind you right now. Piche, can you see that light? Yeah, that light will flash at 3 minutes 30 seconds. That's the 30-second signal कि तुम लोग को निकल, like you'll have to wrap up your piece within 30 seconds. Now if you all don't, then there's another light that'll come, same light, and it'll stay on for at the 4-minute timer. Now see, we don't select, so I don't work at Habitat anyway, firstly. I am just an artist that comes here to perform. We don't select the people. Can you see your camera there? There's a camera that has an eye on everything. I call that the Illuminati. Yeah, because I've never seen the people behind the camera. Genuinely, I've been coming here for over a year and a half now, and I've never seen the people behind the camera. They select slots. And then, like the list that comes up on your Instagram story, they select it. And they are seeing how long you're taking. If you take more than 4 minutes, I am not saying you're not going to get a slot. But I am also not saying that you're going to get a slot. So आपको जो समझना है समझ जाओ. At the end of the day, it's all about respect. You've given a certain stage, you've been given a certain platform. There are other people that have been given the same opportunity as you. So don't hog your time. Don't hog the time because at the end of the day, an artist respects another artist, right? Everyone has to respect everyone on stage. मुझे भी थोड़ा recording करना है reels का. तो मुझे भी थोड़ा time दे देना. नहीं तो मुझे फाट खत्म करना पड़ेगा. That's one thing. If you're doing something that's going to trigger someone, please give a trigger warning. It's only respectful to do so. If it's something that someone is not comfortable hearing, just give a trigger warning before your piece starts if you know it's going to be a little intense. That person who is not comfortable, step out for 4 minutes, and I will go physically get them after 4 minutes. Don't take it personally. There's a lot of things that some people might not want to revisit. So don't take it personally. It's nothing related to you as an artist or you as a person. It's just on the piece that you've written. Right? Next. Shairis, how many people are doing shairis? Give me a chair. How many guys? Oh, no one's doing a shairi. No one's doing Hindi poetry. See, now you can realize why I'm from South Bombay. मुझे फर्क नहीं पड़ा. तो अगर आपको हिंदी पोइट्री में अगर किसी को दाद देनी हो तो वाह वाह कर दीजिए, स्नैप कर दीजिए, क्लैप कर दीजिए, खड़े हो जाए चेयर पे, टी शर्ट मत निकालो. कौन हो रहा है? You guys want to do that? Do that. People that are doing English poetry, they'll Hi. Yeah. People that are doing English poetry don't like to be interrupted. So it's like because they've got a flow, right? They've got thoda poise. So they like to be a little, So just snap if you like something. They'll enjoy, they can kind of then appreciate that you are listening to them. So snap. Appreciate the artist. It's okay if you don't clap for me. I mean, I've got like an hour and a half with you guys on stage, so I'm just going to come every 5-7 minutes and talk to you all for like 10 minutes, so it's okay. You're going to get tired of me by the end of it. But appreciate the other artists. So, before we begin, I'm going to count till 3, 2, 1. I'm going to do like a countdown, and I want to test how loud you all can clap and cheer. Ready? 3, 2, 1. Perfect. So now y'all have set the bar here. Cool? It's not me. I didn't do anything. It's y'all. I didn't tell you all to do it. I just told you all to clap. And y'all set the bar here. So now maintain that bar throughout the show, yeah? So are we ready to call on our first act of the evening? Thank you. That's one person. Are we ready to call on our first act of the evening? The next person I'm about to call is the first time performer doing a first ever poetry open mic at Habitat. So please can we have a huge round of applause and welcome Jigna. Keep it going. Oh yeah, my bad. Height difference. Yeah. So people, there's a button here. Okay.
That easy. That is it. Yeah. I forgot that. By the way. Okay. Is this good? Yeah. Hi everyone. Hi. My name is Jigna Kajuria. I'm a theatre artist. I've performed before, but at Habitat I'm performing for the first time. Woohoo. So, कुछ ज़्यादा भूमिका ना बांधते हुए सीधे चलते हैं इसके ऊपर. I'll start with a Hindi one. सोचती हूँ एक दिन ऐसा आएगा जब तेरा नाम तक भूल जाऊँ, जब तेरा चेहरा भी भूल जाऊँ और तेरी याद बिल्कुल ना आए. सोचती हूँ एक दिन ऐसा आएगा जब तेरा नाम तक भूल जाऊँ, तेरी याद बिल्कुल ना आए और फिर दिल के किसी छुपे कोने से ये दुआ भी कर बैठती हूँ कि वो दिन कभी ना आए. Sorry, just give me a minute. एक चाइल्ड अपने में हम कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन हम सब में कहीं ना कहीं एक बच्चा कहीं पे ज़िंदा रहता है और शायद मुझे लगता है उसको ज़िंदा रखना भी चाहिए. तो एक चाइल्डहुड के ऊपर एक थोड़ा सा मैं इंग्लिश में कहना चाहती हूँ. There is this little child, afraid of the dark. She just wants to be hugged. There is this little child, too shy to go about. She just wants to be accepted. There is this little child, too nervous and unsure. She just wants to be encouraged. There is this little child, all dreams and trust. She just wants to make you happy and proud. Look deep inside you. Pause. Pause for a couple of minutes and listen. There is a child hiding deep inside each one of us. She just wants to be loved. Guys, keep it going for Jigna. One more time, one more time. Thanks, man. That's beautiful. There's a child in one. There's a child in everyone. I believe so as well. तो मैंने भी एक बचपन पे बहुत पहले 2-3 साल पहले एक लिखे थे. I mean आपके लिए तो like for me, I know I'm just 25, yeah. And a lot of people are way older than me in the audience. So I'm like, हाँ आपके लिए भी मैं बच्चा हूँ. लेकिन मैं भी बचपन को अभी थोड़ा याद करता हूँ because I'm just like, it was the best time. I mean, life was a lot easier back then. When we used to go out with friends and go to our cafes and fight about who's going to pay, right? We used to find a million reasons to do things for our friends by going out of our way. Life was much simpler back then when we had friends with dreams that we all wished just came true. We didn't worry about what the future held, just took the days as they came, not realizing when we were left with just a few. And I think that's the beauty about childhood. That's the beauty about childhood. We didn't worry about what the world would say. We didn't worry about हमें जो करना था हम करते थे. लोग क्या कहेंगे ये हमारे दिमाग में था ही नहीं. And I think if we can kind of inculcate that even today in our lives and live the life we want to, live the day we want to, and live the next few hours we want to, and not worry about what the person sitting next to us or the person sitting in front of me, what my family will think of me, we're going to be a lot happier. Right, and that those are beautiful thoughts. So one last time, one round of applause for Jigna. But then that doesn't contradict your theory of validation. Of validation? It does, but there are two things. I believe if you're an artist, the only thing that you do get in life is validation. So I'm not saying we go out to seek validation. We go out to express ourselves, not worrying about what the person would feel. Like at the end of the day, art is all about your expression. No matter what art form, it could be painting, it could be dancing, it could be poetry, it could be storytelling, comedy, anything. It's about expressing the way you feel. It's your emotion, it's your true self, right? And if someone does relate to it, you feel happier if they validate that.
right? You feel okay, fine. कोई तो था इस पूरी रूम में या इस पूरा रूम में that related to what you said. And you don't have to have it every day, but it's good to earn that validation. It's the same thing with money, right? When you're working, obviously you're working for yourself so that you can feel better about yourself, so that you can buy yourself something, like whatever you want. But that extra money sometimes that you get now, a bonus or something, it's always better. Same thing. Don't worry about what the world would say. लोग क्या कहेंगे ये हमारे दिमाग में मत रखो. Express yourselves the way you want to. So it's a very thin line. I get what you're trying to say. It's a very thin line. Before we call on our next artist, I just wanted to talk to you guys about something that's very important to me. Talk to you guys about mental health, because June is also Pride Month, but it's also Men's Mental Health Awareness Month. And not a lot of people were talking about it. So I just wanted to talk to you guys. If you guys are okay, trigger warning, the next piece is about anxiety and depression. I had this piece that I'd written called Captivity. A little bit about me. I used to live in Canada for 6 years. I moved back just last September. And I moved back for stage, and I moved back for poetry. And sometimes, living alone, living away from home, across the globe, that's like 25 hours, bloody by flight, firstly. No, take a day just to travel. It gets depressing. And I was on medication. I was diagnosed with clinical depression. I did in this piece. It goes something like, stuck inside captivity, I feel like a beast is about to be let out. The four walls close in on me as the hours pass, as I keep trying to shout. Yelling for my life as I know I won't survive much longer. Pleading to God that this ends soon, as I get this feeling of having to ponder. Pondering about the times when I finally feel free, just waiting to get out of this captivity. People don't seem to understand that it's not the way I volunteer to feel. I'm just a normal boy who hates his anxiety. I'm a normal boy who's trying to heal, to get better from the horrible and miserable times that I live in. It's not something that I can fully express in words, but something in which I just seem to give in to a dark and raw emotion that's left this body without a happy soul. I don't know when I'll be back, but I know that's going to be my goal. My goal to put this social stigma to rest. My goal to be the very best. My goal to be a happier version of me as soon as I get out of this captivity. Thank you. Ready to call on our next artist? Yes. So, with a huge round of applause, keep it going. Thoda aur. Give it up for Nimisha. I think it was beautifully done. And also, life is full of contradictions and complications. Let's not be afraid of that. And probably that's one of the reasons we all are here. That's how we get motivation or inspiration. So, बारिश का मौसम है. बिना बारिश के बारे में बात किए आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा. छोटी सी है पंक्तियाँ. घनघोर बादल छाए नीले आसमां को सजाए. बूंदों की ये लड़ियाँ हैं या अंतहीन सपनों की कड़ियाँ. चातक के ये विरहा के बोल हैं या खुशी के ये ढोल. अरे पंख भिगोती ये नेरे ढणी अश्कों की नहीं बादलों की है. नम ये आज धरा है. नम ये पात तरु के. नम ये कण कण सृष्टि का न जाने जगा रहे हैं कितनी आरज़ू. हाँ मन भावन है ये दृश्य सारा. सावन की ही झनकार है. Generally don't write about love poetry, but this is another piece. इसकी भूमिका नहीं बांधूंगी, शायद
पोइट्री में ही अपने आप मिल जाएगा इसका जवाब कि ये किसका है, क्या है इसकी भूमिका। माना कि तू जंग का सिपाही है, तेरा मकसद इनकलाब बेहद ज़रूरी है, पर क्या सुकून के 2 पल बिताना इतना गैर ज़रूरी है। माना कि तू सिर्फ मेरा नहीं इस पूरी कौम का पासबान है, तेरा यूं बहक जाना कतई मुमकिन नहीं, किसी की आंखों में खुद को खो देना कि आज़ादी तुझे नहीं। पर तुझसे इश्क करने के लिए, तेरे लिए दुआ मांगने के लिए मुझे किसी की इजाज़त की दरख्वास्त नहीं। बस एक गुजारिश है तुझसे कि कभी तू थोड़ा थम जाना, बैठ पहलू में कुछ मेरी सुन, कुछ अपनी सुनाना। ना करूँगी चांद तारों की बातें, बस खामोशी में आँखों की सरगोशी में रूह को जो ठंडक दे जाए, ऐसे 4 पल तू गुजारना। ए मेरे सरफरोश, तू भी तो कभी खुदगर्ज हो जाना, Thank you. That's it from us. प्यार के बारे में क्या बात है। How long have you been writing for Nimisha? Writing from quite some time, but started performing recently. After the birth of my twins, I thought I need something for myself. Wow. How old are your twins, ma'am? They're just 2. So cute. Yeah. You're right. Emotion समझ गए ना बस. And ma'am, are they like sets of boys, girls, They are mixed? a set of girls, and one of them is not doing so well today. So I Oh. might leave. It's No, not that take I your don't time. want to- I don't want to offend anyone, but I might. What are their names if you don't mind me asking? Yashika and Anika. Yashika and Anika. Anika. Yashika and Anika, your mom did beautifully today. I know you all are too young to see this, but I hope, who's Anika? Yashika. Yashika, I hope you get well soon. Thank I know the weather is a little bad right Yeah. now, but it's understandable. So I hope you guys get well soon. Round of applause for Nimisha, ma'am. I don't know if it's a coincidence that my name is Yashika. Yeah. I heard your name there, and I was about to tell you. It's nice. I like it. If anyone cares, my name is Arsh. Just putting it out there. What a coincidence, guys. तो बात करते हैं. हाँ? I mean, see, देखो, we're stuck in this room for the next hour and a half. So might as well get to know everyone, right? By the end of it. Because सबके साथ ही अभी बैठना है. आप चले जा सकते हैं. Permission है. Don't worry, I know she's just waiting. Okay. A big fan. साहिल, क्या बात है साहिल भाई. How many of you guys know what Sahil does? Yeah, I guess. Yeah? अरे राउंड ऑफ अप्लॉज साहिल भाई के लिए. Brute India. Sahil is a lovely guy. I also met him about a year ago. एक साल हो गया. इधर ही मिले थे हम काफ़ी. I mean और कहाँ मिलेंगे, इधर ही मिले थे हम 1 साल पहले. He's a sweetheart. चल साहिल आप इससे बात करते हैं. I mean इनके लिए बता दीजिए कितने टाइम से लिख रहे हैं सर आप? 4 साल 4.5 साल. एक इनकी कविता है and I'm butchering it, okay? I'm going to completely mess it up because I can't do it. But क्या था तेरा ब्रो, वो जो हम बिहार से नहीं है वाला, वो वाला एक बार अगर सुना सकता है 2 लाइन सुना देना. हाँ वो वाला. You had done no about your accent saying I talk like this क्योंकि मैं इसके स्टार्ट ऐसे हाँ. देखो हम रा को रा बोलेंगे. हाँ We all felt supported. Being a- बिहार के हैं लेकिन बिहारी मत कहना. क्या बात है नहीं, यार. वो बात नहीं है. Hmm. If you're talking good, if you're walking good and everything else, like people will be like, "तू बिहारी है?" Like I've given them a shock. But I'm naturally being me, and that's how. Where in Bihar are you from? Bhagalpur. बिहार से हैं आप. Yeah, proper.
मुझे नहीं पता ना ब्रो मुझे बिहार पता है बस Not your fault. no I'm sorry You must be knowing Bhagalpuri silk, and if you don't know, you can search about it. Yeah. One thing in history. Yeah. I will कौन सा सिल्क भागीपुरी सिल्क भागलपुरी सिल्क ठीक है सही है एंड उससे क्या क्या कपड़े बनते हैं सारे काइंड्स ऑफ क्लोथिंग Of course, kurta, pajama, sarees, you know, ये सारी चीजें तो बनती हैं. There is one very nice fabric that we have as comforters, which is called dal chadar. दल चादर Awesome material. Like बॉम्बे में कहाँ मिलेगा ये सब मैं ला के दूंगी. अरे डन है guys follow me on Instagram my name is Malhotra Arsh on Instagram please slide into my DMs I would love it if you're giving me like chadar and all anyone can slide into my DMs I love materialistic things man I'm kidding no dude I'm gonna plug in a show every now and then because why the fuck not I'm hosting so like I get that privilege I'm doing a solo show thank you I'm doing my second ever solo show out here in this very studio on the 16th of July. It's titled Kya Pata Kal Ho Na Ho. It's actually based on the facts about how people do things for me when I don't care about materialistic things. I just cracked a joke about that. It's based on my life. It's based on my experiences. It's based on my love life. And not only love life, part of it is on the love life, but majority is about my experiences in Canada. And it's shaping me to be who I am today. I'm going to sound a little narcissistic and boast a bit when I say this, but the last show that I did out here was sold out. We sold out tickets in 2 weeks. So, Hanji? It's a poetry show. It's a storytelling show. I'm going to do a bit of the show later on today, and you can get an idea of how it is. It's basically storytelling, and in that story there is a bit of poems. There are a few poems in each story. So it's kind of embedded in that entire concept. The set that I'm doing, I've written it about 3 months ago, so very recent. I've written a set. I performed it here on 6th May. It was a sold-out show, and I'm hoping to sell this one out as well. So please, 16 July tickets on Book My Show and in my bio. So please buy it. Thank you. 4 p.m. Sunday. So जो हमारा Sunday open mic हो रहा है ना आज ऐसे इसके बाद ओपन माइक के बाद ठीक 4 बजे मेरा शो है तो 2 बजे ओपन माइक शुरू होगा उसके बाद तो प्लीज स्टिक अराउंड ऑल्सो इफ यू कम फॉर द ओपन माइक जस्ट स्टिक अराउंड यार टिकट्स की छोड़ना मत खरीद लेकिन आ जाओ यार मुझे टिकट की परवाह नहीं है जैसे मैंने बोला आर्टिस्ट को पैसे की परवाह नहीं है वैलिडेशन की परवाह है एंड दैट्स व्हाट आई फील हाँ तो बिफोर आई वांट टू डू अ लिटिल बिट ऑफ अ पीस वन ऑफ माय फेवरेट पीसेस एंड सम पीपल सिटिंग इन द ऑडियंस हैव हर्ड इट लाइक एटलीस्ट आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग एटलीस्ट 30 times. Like if I said 10,000 times, I'd be exaggerating. But 30 times, I'm actually not exaggerating. And because Nimisha spoke about love, I had written this piece about 3 years ago on Valentine's Day. Because I didn't have a Valentine. So, huh? Pain, bro, pain. So I had written this piece titled The Girl of My Dreams. Okay. I closed my eyes, but I saw her there. Standing in front of me. Radiating with elegance. She looked like a queen. It had been 15 years and she was the first girl to ever steal my heart. Who knew life would be so kind to give me another chance to restart? Praying to God she remembered me, I approached her with nervous hands. Hoping she could spare a few moments, I asked her for a dance. She held my hand as I led her to the floor. I asked her if she remembered who I was. Trying to place me in her head, she took a long pause. Waiting until she realized it was the same person who fell for her as a kid. Then she nodded in agreement, and I understood that she did. As the song began, we reminisced on our childhood. Reliving those memories, we felt something we never knew we could. She held my hand as I asked her to look up at the sky. It was in that moment I knew I had to tell her that I felt the same as the years went by. I tried to pull her close to me to feel her heart against mine as we held each other. It felt like 2 souls were lost in time. Butterflies in our stomach. Butterflies in our stomach, giggling with laughter. We forgot our despair as our eyes locked with sparkle. We knew
It was love that was in the air. I held her waist and I bent down to give her a kiss. But my alarm went off as my eyes opened, and I was robbed of that moment of bliss, which is why, unfortunately, the girl of my dreams will only remain the girl of my dreams. Thank you very much. Yeah, I was single on Valentine's, bro, so I could only dream of it. Are we ready for the next act? Yeah? So, yes. Keep it going, keep it going, keep it going for Prerna. Keep it going until she comes on stage, guys. So could I like go late? Huh? Sorry guys. So, the next person I'm about to call is not Prerna. April Fool. The next person I'm about to call is a really, really talented poet. I've seen him perform for the last couple of years, and you guys know him as well. So, can we have a huge round of applause? I'm asking to give a huge round of applause, guys. And welcome on stage, Sahil. Keep it going, keep it going. Until he comes on stage, guys. Thoda, come on, keep it going. He's going to take time. Bihar ka hai. Lekin Bihari mat कहना, guys. Keep it going. मेरा तो हफ्ता दिन बन गया। अच्छा, लोग पहचान रहे हैं। ये रिकॉर्ड हुआ है ना, ये पापा को भेजूंगा कि क्या कह रहे थे आप, पैसा नहीं है, वैलिडेशन तो है। हाँ ठीक है, तो मैं ना एक कविता सुनाने वाला हूँ, और मैं ये 2-3 बार परफॉर्म कर चुका हूँ और भूल जाता हूँ हर बार। तो इस बार मैं रात भर जग के ये याद करके आया हूँ, फिर भी कॉन्फिडेंस के लिए। तो अगर भूल जाओ तो माफ़ कर देना। इसका टाइटल है उम्र 23। ठीक है, तो ये चालू होती है कि लोग कहते हैं तो 23 का नहीं लगता, तब मेरे मेल ईगो को ठेस लगती है। सोचता हूँ आदमी कब दिखूंगा, तब लगता है आदमीयता नीरसता और कठोरता से आती है। हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं अभी भी आदमी बन ही रहा हूँ। दरअसल मेरे लिए उम्र से छोटा दिखना दुखद नहीं है, दुखद है ये सुनना कि तुम अपनी उम्र से बहुत बड़ी बातें करते हो। अगर आप भी अपनी उम्र से बड़ी बातें करते हैं तो ये भयावह भी हो सकता है, क्योंकि आपकी रफ्तार तेज़ है। आप जल्दी ही सबसे ऊब जाने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपकी जीने की रफ्तार तेज़ है या मौत के तरफ के सफ़र की रफ्तार तेज़ है, पर जो भी है तेज़ी आपको आगे ले जाएगी। सबसे आगे होना सफ़र जल्दी ख़त्म कर देगा। फिर आपको या तो अपने सफ़र को परिभाषित करना होगा या फिर अपनी मंजिल को। दोनों ही सूरतों हाल में आप फोमो का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि सबसे आगे रहने पर छोड़ देने का और सबसे पीछे रहने पर छूट जाने का गम आपको खाता रहेगा। मैं भूल गया। लिखा भी नहीं। दोनों ही सूरतों हाल में आप फोमो का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि सबसे आगे रहने पर छोड़ देने का और पीछे रहने पर छूट जाने का गम आपको खाता रहेगा। इस तरह आप मैं पूरा ही क्यों भूल गया। इस तरह आप गम के पालन पोषण में लग जाएंगे। गम के पालन पोषण से गम खत्म होने लग जाएगा। जब दुख खत्म होने लग जाएगा तब आप अपने दुख खुद बनाने लग जाएंगे। जिस दिन आप अपना दुख खुद बनाना सीख जाएंगे उस दिन इसे चाहकर भी छुपा नहीं पाएंगे, क्योंकि दुख अब आपकी स्वरचित रचना है और इंसान अपनी स्वरचित रचनाओं को प्रदर्शित करना ही चाहता है। फिर लोग आपके दुखों को देखकर चौंक जाएंगे और कहेंगे कि तुम अपनी उम्र से बड़ी बातें करते हो, तुम 23 के नहीं लगते हो। अच्छा, एक वेब सीरीज आई थी 2020 आई थिंक, पाताल लोक। किसी ने देखी है क्या? पाताल लोक। हाँ, तो इससे इंस्पायर होकर मैंने एक कविता लिखी थी जिसका टाइटल है सिस्टम, और ये मैं देख के पढ़ूंगा तो भूलूंगा भी नहीं। थैंक यू। जो तोला नहीं गया अब तक वो किसी से कम नहीं है, कि जैसा दिख रहा है वैसा ये सिस्टम नहीं है सबकी हदें और हदों का काम सबको अता है। सिस्टम में किसकी है क्या जगह ये सबको पता है। जो दिखाया गया है उसका सच कोई नहीं सुनाता है। ये सिस्टम भी हमसे बस यही चाहता है कि अंतर मन की शक्ति का इस्तेमाल रोक हम सब बेच दे, ये धरती, ये स्वर्ग और पाताल लोक। अब ये आत्मा भी इसी लालच की प्यासी है।
सबसे अच्छे लोग पाताल लोक के निवासी हैं। धरती और स्वर्ग लोक पर भी अच्छे लोग थोड़े हैं, पर पाताल लोक के लोग कीड़े मकोड़े हैं। इनकी मजबूरियां और हालात इनकी ज़िंदगी को पीड़ा बनाती है। इनकी मजबूरियां और हालात इनकी ज़िंदगी को पीड़ा बनाती है। स्वर्ग लोक से निकली गंदगी इनकी ज़िंदगी को कीड़ा बनाती है। कीड़े न जिनमें संवेदना है, न प्यार है, कीड़े न जिनके दोस्त है, न परिवार है। इन कीड़ों के कई प्रकार हैं। कोई जाति का नहीं तो किसी ने धर्म को छोड़ा है, कोई है नपुंसक तो किसी के हाथ में हथौड़ा है। ये कीड़े शायद ही कभी अपनी कहानी बता सके, वो कीड़े जो कभी स्वर्ग लोक तक ना आ सके, पर इनकी सत्ता के मध्य की गंदगी को खा सके। स्वर्ग लोक के वासी अपने ही गुनाहों के लिए इन कीड़ों को माफ़ करते हैं, और ये कीड़े उनकी सत्ता के सिंहासन की नीचे की लाशों को साफ करते हैं। सफाई जो जा चुकी है इनकी ज़िंदगी से, सफाई जो शुरू होती है इनकी फैलाई गंदगी से, ऐसी गंदगी जिससे निकल जाता है हर किसी कदम, ऐसी गंदगी जिसको फैलाता है ये सिस्टम की फैलाई ये गंदगी सिस्टम का सच कह देती है। यही गंदगी इन्हीं कीड़ों को सिस्टम में जगह देती है। इन्हीं जगहों में पाताल लोक का हिस्सा सबसे बड़ा है। सिस्टम की इस कहानी को मैंने भी व्हाट्सएप पे पढ़ा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लोग मुझे मटेरियलिस्टिक, मैंने बोला मुझे मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत पसंद है, सो थैंक यू साहिल। वाह यार, मैं हिंदी में नहीं लिख सकता यार ब्रो। I know how deep Hindi hits, and I've always been jealous of the people that can write so beautifully. But my vocabulary in Hindi is limited, yeah. It sucks. Like, huh? Not Canada, dude, South Bombay. कनाडा में मैंने एक्चुअली बहुत हिंदी बोली है। इनफैक्ट मेरा जो अब fuck it English, my command over the language today is a lot better than what it was because of the fact that I went to Canada. Okay. Yes, because it was like a lot of people, like I met a lot of people from Delhi, I met a lot of people from there, so my command actually became a lot better, which I really like. So I'd written this piece, funny piece, थोड़ी शरारती शेर है साहिल भाई, तो आपकी इजाज़त से कि आओ तुम्हें सुनाए बातें कुछ खास, आओ तुम्हें सुनाए बातें कुछ खास, जिसके लिए रहना होगा तुम्हें मेरे पास। आओ तुम्हें सुनाए बातें कुछ खास, जिसके लिए रहना होगा तुम्हें मेरे पास। मेरा हाथ थाम कर तुम चलो मेरे साथ, फिर मैं बना ही लूँगा तुम्हारी माँ को मेरी सांस। Are we ready for our next performer? Yes. I love your enthusiasm. The next performer I'm about to call on stage, she goes by the Instagram name In the Name of Writing. They say now, what is in a name? Writing. So can we have a huge round of applause? Keep it going. And welcome on stage, Yashika. I don't know how I'm gonna top you and you, but I'm gonna try. Same, even I can't write in Hindi. Yeah. I do trip on like really cute like Hindi songs and like, you know, love listening to like Hindi, Urdu poetry. I never know the difference somehow. Ki Hindi words ye hai and Urdu words ye hai, but I love it anyway. So, I have two pieces for you tonight and both are in English. So, I hope you enjoy. Here goes. The first one is named If I Could Be Anything Else for a Day. If I could be anything else for a day, I'd like to be that hope-filled goodbye I bid you each time we leave. If I could be anything else for a day, I'd like to be that sun which lights up someone else's sky. If I could be anything else for a day, I'd like to be a story that you wish to ever come back from. If I could be anything else for a day, I'd like to be that sandcastle which doesn't get destroyed when the tide rolls in. If I could be anything else for a day, I'd like to be both the quiet and the confusion in your heart. If I could be anything else for a day, I'd like to be that path you get lost on while finding your way back to life. If I could be anything else for a day, if only I could be anything else for a day, I'd like to be the poetry I write on a hopeless evening.
The second one, well, as I explained, my love for like Urdu, Hindi, it's just the title I've stolen like a Urdu word. It's called Tabir. For people, I'm sure everyone knows, but just for like the audience, it means the interpretation like of a dream mostly. So Tabir, here goes. The poem is in English. My heart skips in Dandelion fields, trying to defy the dream it is in. Fireflies giggling, shooting stars, trying to find a way home. I relish in the feeling of being left behind by time. Today, love chooses to seep through the glow of my phone screen amid notifications of your text messages. It comes through words and actions at the same time, some which insecurities don't let me believe that I deserve. You tell me that you're afraid of losing me, but it seems like fate has worked overtime for us to bring us closer, to help us belong to someone like each other. Makes me wonder how something in this ever changing, ever growing world can feel so permanent. This distance acts sometimes as an ode to the way you see me, messed up and beautiful. An ode to the way you let me inside your heart, messed up, but making my heart full. There's a closeness despite this distance. I've decided that love is everywhere, only waiting to be seeked. I only had to recognize that mine came in the form of you. Thank you. That's all from me. Sorry, I was eating. Guys, round of applause for Yashika. Game खेले? How many people are we? 1, 2, 3, 4, 5. Wait, fuck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Are you all playing as well? Yes. 10. Ma'am, you in the middle? Come ahead, no? So I can see you. Prerna, that's your friend? No? Okay, I'm But I asking. could be later on. Be her friend, okay, after this? Yeah. Who have you come to support, ma'am? Ronit. Your friend is here, no? Cool. I come sit next to him now. Why are you sitting all the way there? I didn't know. Anyone can sit here. What's your name, ma'am? Manya. Manya, what do you do? I'm studying right now. I'm in my second year. What do you study? Fashion. Fashion. And how do you all know each other? We're from the same school. He's my senior. He's your senior. नालायक. Juniors. देखी नहीं. पहले ही शुरू. हैं? Just messing with you. And which school did you guys go to? Shishikun International School, Indore. Indore. They went to an Indore school. नाम समझ में नहीं आया क्योंकि इसने इंटरनेशनल स्कूल बोला है. Shishikun International. शुशुकुंज. Yeah. मतलब है कुछ? Genuinely, I'm asking. So basically, Shishu means a kid, and Kunj, I guess, is an entrance or something. So it's basically the combination of those two words together. Nice. And how long do you all know each other for? 3 years now. Yeah. हाँ हो ही 20 साल के. मतलब स्कूल से तो अभी निकले हो. And Manya, were you studying fashion? ISDI, Mumbai, BKC. अच्छा ISDI Mumbai. Nice, ISD Mumbai. Oh, you know BKC. that place. Yeah. My sister went to ISDI. Ma'am is gonna take my case throughout the show. हाँ कि साउथ बॉम्बे का लड़का है ये कि मतलब सीलिंग के पार है. Nice one, ma'am. Nice song. आपका नाम क्या है मैम? I'm Sonal. सोनल. Okay. Cool. याद हो गया ना, आप बताएगा. नहीं अब मेरे पे है ना कब बुलाना है आपको शो में शो के बाद. I'm messing with you, man. I'm messing with you. And do you like fashion? What made you get into fashion? I'm sorry. What made you get into fashion? I don't remember exactly, but I was like, I wanted to do fashion since I was 6 years old. So ever since that, I've been fascinated by it. And I felt like if something could fascinate me at so early in age, and I never felt like looking back, then that was the right thing for me. So fashion fascinated you, Yeah. right? Yes. Come on. You gotta give me that. I gave you all a heads up before the show started, okay? That I am going to crack. You were not there. But I gave them a heads up that I am going to crack horribly cringy jokes. Because I am like that. Now I so know. now you know. So, fascination from fashion. Cool. Cool. So we're going to play a game, okay?
It's a storytelling game. Okay? Yeah, it's a storytelling game. It's gonna be mad fun. It's called ABC. Cool. We play 2 games, one ABC, one 1, 2, 3. They are very similar of nature. They just got a little bit of different rules. So we'll start with Manya, and we'll go to Ronit, Jigna ma'am, Sonal, Prerna. Blanking on you. I've met you like 5 times in my life. And I've heard so many of your stories so many times. Yes. I'm sorry. I'm not gonna say Arey, okay, fine. I will find you on the list. Yashika, can you pass you the list? Thanks. I will find you. I know it. असली नाम नहीं लिखा है. ये क्या है ये? असली नाम कौन नहीं लिखता? Are you hiding from the cops? Like, what the fuck? नहीं ये लिस्ट में लिखा है सॉरी. Riddhi. I know her name is that. Riddhi. Yeah, I know. I just had to see it once. Because your Instagram is different. Yeah, see, I'm telling you, I knew that. Like, your Instagram is different. That's what confused me. Like a bit. So, okay, cool. So you go to Riddhi, Yashika, Namrata ji, Jaideep ji, Sahil, and then we'll end at Kajal. Are you playing? No. Okay, cool. Hi, sir. Hi, sir. You can join us ahead. Yes. So, aja. Are you playing? No, I'm going to make you all play this game. It's mad fun. I play this on every open mic, especially that I hosted Habitat. Posted a few open mics at Habitat. Okay, now you're also playing. No, I'm not playing. Yeah. I'm the host. Sorry. I'm going to pay for this. That's my girlfriend. I'm going to pay for this later. So, what's your name, sir? Faizan. Okay, cool. No, I just know why you're here. And you want to play this game? Cool, you have no option now. Okay, so we'll start with Manya. We'll go like this, Kajal, Riya, and then Faizan. We'll end at you, okay? Now, it's called ABC. How it works is, I'm going to give you all a random letter. And Vivian, you with me? And are you not playing the game, but you're going to help me give a suggestion? That you can give, na? Cool. So Vivian's going to give a suggestion for something that I ask. Now, based on that, all of you all collectively have to come up with a story. Cool? The trick of the game is the letter that I give you. So, for example, if I give you, say, J, you'll start your first line with J. You have to start your next line with K. L, M, N, O, P, so on and 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 so on. Cool? The trick of the game is, so you start with, say, for example, Vivian says cafeteria. Just when I wanted to get a cappuccino, the cafeteria shut. Knowing how much you love coffee, I could have kept the cafeteria open. Lol, can we not have the cafeteria shut so early? You know, something like that. So we have to go in alphabetical order. And all of y'all, one by one line after the other, have to come up with the story. Any questions? I don't care. I don't. Sorry. I hit this in my mouth. So, can we get a Vivian? Give me a random letter. P. P. Great. So your starting letter is P. Vivian, give me an activity that you love doing with your parents. Dinner. Okay, cool. So your starting letter is P. So LMNOPQRSTUVWXYZ. P, right? P. Okay. P for pool? Yeah. Perfect. P for perfect. Okay. Cool. We ready? Yeah? So your letter is P. Your suggestion is dinner. Start. Give me a line. Am I getting time for No. There's no timer for this game. I just want, because it's storytelling and poetry, I want to see how we as an audience collectively, when you all have never met each other, have to think on the same lines as the person sitting next to you. So I want to see where we get with this. It's an experiment. Okay. So, preparing for dinner, for my family, my mother realized that she forgot to cook rice. Preparing dinner for my family, my mother realized she forgot to cook rice. Cool. Q. Queens do not do that work. She was the one. I wouldn't let my mom do it, so I cooked the rice. You all are from the same school. मैंने बोला एक sentence तुम लोग 3 दे रहे हो. मैं भूल भी गया उसका यार थोड़ा छोटा दे. Preparing dinner, my mother realized she did not cook the rice. Queens do not do this.
क्वींस डू नॉट डू दिस. छोड़ इतना ही भाई, इतना लंबा ऐसे दिया है मैं भूल ही गया हूँ. नहीं मैम ठीक है बता. हाँ दुरानित. Queens should not cook, so instead I make the food. Queen should not cook, instead I made the food. That's perfect. That's perfect. Jigna ma'am. Okay. Rice was finally cooked by the prince. Rice was finally cooked by the prince. Now you've got characters in the story. Lovely. Lovely, lovely, lovely. Sonal ji. So what if there was no salt in the rice? Nice. So what? There was no salt in the rice. Prerna. There was no time for me to eat it. I can't even tell how it tasted. There was no time for me to eat it. I can't even tell. Riddhi. You. You. I know you. Arey, no, the letter U. Okay. You know I like rice. I prefer rice. That's why. Come on. She said, you know I like rice. rice. But starts with why? I didn't eat it. She said she likes rice. Starts with you. हाँ, we'll start with you. Chalo, okay, you think in the meantime, I'll do a quick recap, okay? Preparing dinner, my mother realized she forgot to cook the rice. Queens do not do that. रेवा दे नहीं. Rice was cooked finally by the prince. So what? There was no salt in the rice. There was no time for me to eat, so I don't know how it tasted. Unfinished my dinner, I went back to cook the rice. Unfinished dinner, I went back to cook the rice. That's fair, that's fair, that's fair. No questions asked there. UV. Victoriously, the prince emerged from the kitchen. He went to buy ice cream. Whoa! Lovely. W. Want to know why all the family members want to cook? Wonderful. Beautiful. What is the occasion about? Beautiful. Jaideep sir. Huh. X was also too bad at cooking rice. Fair enough, fair enough, fair enough. Sal bhai. A. क्या बोलती तू? You guys are telling stories I can't relate. Nice. Lovely. Lovely. काजल. जेप्टो से ऑर्डर करना चाहिए. प्रिया. Hey, that's been my time. That's been my time because A, B. Last B. Last line. Okay, I'll give you time. I'm going to recap before we get to the last line, okay? Preparing dinner. My mother forgot to cook the rice. Queen does not do that. So what? No. It was R. Rice was finally cooked by the prince. So what? There was no salt. There was no time for me to eat the rice. Unfinished, I went out to cook the rice. Victorious, the prince emerged. What was the occasion that everyone was cooking? X was not good at cooking rice. You guys are not. You guys are relating stories. You guys are saying stories that I don't relate to. Zepto से करना चाहिए प्रे. अमृता जी. Actually, I was just telling आपको slot चाहिए? By hosting with थोड़ा advantage. So we'll do a quick recap, okay? Now no crosstalk. Because sir को अभी proper ending देना है यार ये story का. I need to see where the story goes. Characters है इस story में. Cliffhanger है इस story में. Twists है इस story में. Like Abbas Mastan, who? We. Preparing rice. Preparing dinner. My mother forgot to cook the rice. Queens do not do that. I don't always forget what to say. Rice was finally cooked. There by the prince. There was no salt in the rice. Unfinished. There was no time. Unfinished. I went to cook the rice. Victoriously, the prince emerged. Went to eat ice cream. What was the reason of cooking the rice? X was not good. You guys are saying stories I don't relate to. Zepto कर देना चाहिए. A. That's been my time. Yes. बस भी कर लगा खाना अच्छा था. Guys, round of applause for everybody. I love how collectively we can come up with a story. It's beautiful. It's beautiful. It's beautiful. So, are we ready for our next act? Yes. Yes? Keep it going. थोड़ा जोर से.
थोड़ा जोर से प्लीज गिव इट अप फॉर रोनित. हम दोनों मेरी कहानी का एक हिस्सा थे, अब एक किस्सा बनकर रह गए हैं. इसमें पहला किस्सा था इश्क का. अगर हम अपने किरदार बदल देते तो शायद कुछ पल और साथ रह लेते. दूसरे किस्से में दोस्ती होते, मगर आसपास भी होते. सोचता हूं कि अगर अंजाम कुछ और हो सकता था तो शायद शुरुआत भी. ना तू मुस्कुरा कर पुकारती और ना उमड़ती मेरे दिल में लहर आस की. अगर ये नहीं तो और क्या होता. तेरे करीब नहीं मगर फिर भी तेरे पास होता. मैं जानता हूं मुरझाए हुए फूल दोबारा नहीं खिल सकते, मगर हम तो नए बीज बो सकते हैं. बोलना, क्या हम फिर से पहली बार मिल सकते हैं? जो हो दूसरा किस्सा तो रात काटेंगे नींद में, ना कि एक दूसरे के इंतजार में. महफूज रख लेंगे वो सारी बातें जो करीब होने का एहसास दे. इस बार नहीं कहूंगा कि तेरी मुस्कान के साथ तो वो आधा चांद भी पूरा लगता है. नहीं कहूंगा कि तू ही है वजह कि सूरज को लगता है कि दिन में भी चांद चमकता है. बोलना, क्या हम फिर से पहली बार मिल सकते हैं? इस बार नहीं कहूंगा कि महक जाती है वो हवा भी जो तुझे छूकर गुजरती है. नहीं कहूंगा कि ये आंखें तरसती है उस नज़ारे के लिए जब तू अपने बालों को झटकती है. नहीं कहूंगा ये सारी बातें और कह दूंगा कुछ बातें. शायद तभी इस दूसरे किस्से के अंजाम में हम अनजान ना हो. अपने गुमान की वजह से हम गुमनाम ना हो. रिश्ते से ज़्यादा ज़रूरी मैंने तुझको पाया है. विडम्बना तो ये है कि भुलाने की बातें करता हूँ तब तेरा ही ख्याल आया है. इसलिए बोलना, क्या हम फिर से पहली बार मिल सकते हैं? So this was the first piece and the second one is ख्वाब. मैं राजी हो जाती. थैंक यू. ख्वाब. तू एक शख्स जिसे मैंने सिर्फ अपने ख्वाब में देखा था. आंखें बंद थी फिर भी मैंने तुझे साफ साफ देखा था. कुछ पल ही सही मगर तेरा ख्वाब बिल्कुल हकीकत जैसा था. जब तूने जुल्फे बालों से आज़ाद की तब दिल ने फिसलने की आवाज़ की और तेरे झुमकों के खनकने के साथ ही मेरी धड़कन ने एक छलांग ली. और तेरी आंखें समंदर सी गहरी थी और पलकें बिल्कुल लहरों के जैसी थी. तेरे चेहरे के इस नज़ारे पर मैं तो डूबने को तैयार था. मगर हो सके तो कभी हकीकत बनकर आना. मैं तुम्हें यही ख्वाब सुनाऊंगा. ख्वाब में तू आसमान को ताक रही थी, मैं तुझे. तू उन नज़ारों को खूबसूरत कह रही थी और मैं तुझे. तू ताक रही थी इमारत से उन रास्तों को और मैं ताक रहा था तेरे आंखों और होठों के बीच के उन फासलों को और ताक रहा था कि कैसे तू हर बात दोहरा रही थी और मैं उसे पहली बार की तरह सुन रहा था. अपने इस ख्वाब में मैं हमारा ख्वाब बन रहा था. इसलिए हो सके तो कभी हकीकत बनकर आना. मैं तुम्हें यही ख्वाब सुनाऊंगा. थैंक यू. I'm gonna make it very awkward by saying क्या आपके ख्वाब का नाम मान्या है? I'm messing. I love putting people on the spot यार. एक बार एक शो में I was hosting that show. Monday का I think open mic था. I was hosting that. हाँ.
आप ही ख्वाब होंगे यार, क्या पता, गर्ल ऑफ माई ड्रीम्स तो इधर ही बैठी है तेरी. Like you wrote now when you didn't have anyone. That हाँ. time I also wrote this poem. कि ख्वाब. You're not in reality. Correct. You're in imagination. So I hope that second piece turns out when I have someone in reality. सुन रहे हो आप? I'm sorry. I love putting people on the spot, dude. It's mad fun. I'm sorry. It's a joke. The other day I had these two people come in and I spoke to them and I'm like, oh, okay, you guys are friends. How do you all know each other and everything? And that guy was like, I am a... No. That guy was like, I am a... No, what did he say? Huh. The girl was a PG in the guy's ex's house. And now the guy and that girl are seeing each other. So I'm like, 1 second, how do you go to a house? Like, you're going to her room or something, and her, not only ex, her full family is there, bro. Like, how do you plan on doing that? Oh, mad fun, though, that show. एक बकरा मिल जाता है मुझे शो में. Hi, बकरा. So you said this beautiful thing. क्या तुम मुझे पहली बार फिर मिल सकते हो? You know that I had written a piece on that because I got the opportunity to meet someone for the first time twice. You guys want to hear that story? Yes. It's true. No? हाँ, okay. You're like, I'm like, ठीक है, नहीं सुना था, बुला था किसी और को. This story actually starts 18 years ago. At the age of 7 मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे डांस क्लास ज्वाइन करना है. एंड बचपन से ही ना मुझे स्टेज पे परफॉर्म करने का बड़ा शौक था. वो कहते हैं ना, मुझे सिंगर डांसिंग का कितना शौक है, वैसे ही. तो आफ्टर रियली ट्रबलिंग माई मदर आई गॉट एनरोल्ड इन द डांस क्लास नियर माई हाउस. दैट्स व्हेन आई मेट हर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. अब पहले मुझे पता नहीं था कि शायद ये मेरी दोस्त बनेगी कि नहीं. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, आई फाउंड हर अ टैड बिट अनोइंग एंड वेरी चिपकू. तो इसलिए हम डांस क्लास में इतना बात नहीं करते थे एंड वी काइंड ऑफ लॉस्ट टच आफ्टर अ फ्यू इयर्स. लेकिन शायद ज़िंदगी को ये मंजूर नहीं था. दे से ना, व्हेन यू डोंट एक्सपेक्ट इट, द यूनिवर्स रिवॉर्ड्स यू इन वेज दैट यू नेवर इमेजिन्ड. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. हमारे डांस शो के ठीक 10 साल बाद वो मेरी ज़िंदगी में फिर आई. I did not wait too long before I asked her out to drinks. Sent her that DM on Instagram. Slid into her DMs. I was like, चल, let's meet for drinks. अब 10 साल बाद मिल रहे हैं तो I didn't have any expectations to even being able to have a conversation with her. प्लान तो था कि 9, साढ़े 9 बजे एक बैंड्रा के एक बार में मिलेंगे. यस, बैंड्रा गया था मैं. बैंड्रा के एक बार में मिलेंगे और मैक्सिमम क्या 12, साढ़े 12 बजे तक घर. लेकिन शायद ज़िंदगी को ये मंजूर नहीं था. I pulled up to the bar at around 9:30 and something in me got jittery. And suddenly, I was very nervous. My hands started to shake and there were butterflies in my stomach that made me feel like I was going to meet someone for the very first time. The funny thing is, we knew each other for years. But sometimes that's what it takes to finally get to know a person. They say, कभी कभी कुछ रिश्तों का नमक ही दूरी होता है, ना मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है. As I opened the door and looked around to find where she was seated, a million memories flashed by. But the minute our eyes locked from across the room, I let out a colossal sigh. Breathing heavily, I built up the courage to go and give her a hug, questioning if it was time that I was finally bitten by the emotional bug. The first thing that came to my mind when I saw her was कि तुम पहले ही ऐसी थी या वक्त ने किया. और कुछ इस तरह से फिर शुरू हुई हमारी काफ़ी फिल्मी कहानी. The night started off as awkward as every standard night. हर conversation शुरू होती थी, so what else has been up? Say. But it just felt weirdly comfortable when two strangers turn into being friends overnight. How does one explain this feeling that feels so right? Conversations ranged from our deepest insecurities to our greatest achievements over the years. One after the other, stories kept flowing, we kept shifting gears. From describing our lives and looking back on how we've changed over time, we kept connecting at every step. Our thoughts and feelings were mutually aligned.
How the time flew by, none of us had any idea. We just wanted this feeling to last, did not worry about what went by and how difficult was our past. I reached out and asked her to hold my hand as it felt natural to be vulnerable around her. She felt the same and held my hand ever so tightly. I can't normally open up to someone, but with her it came very, very naturally. She looked into my eyes and said, "Acha sun, rickshaw lega kya?" And without skipping a beat, I said, "Chal, jahan bhi to le chale." We left the bar at around 11:30, leaving some collateral that we'll be back, and we took a rickshaw to Pali Naka. As soon as we reach, she says, "Acha, wait for 2 minutes, main ab bhi aayi." She comes back with 2 balloons. Now, scientifically speaking, I can't save a balloon for too long. Right? The story happened on the 21st of April. Today is the 25th of June. It's been a while. And I don't know about you guys, but I don't care about the fancy ass dinners. I don't care about the expensive ass gifts. All I care about is this. I can't save the balloon, so it's the same balloon. We named, so you can see, we got 2 balloons. Gulabo, which is pink, and orange. We call it Narang. I'm damn weird, and so is she. So that's how it works out. This right here was the cutest thing anyone has ever done for me. The little things that get my heart going, With the biggest smile on my face and 2 balloons named Gulabo and Narang, we danced our way back to the bar. As the night progressed, the conversation just got even better, and before we knew it, it was time for the bar to close. Unhappy with the idea of leaving each other, we decided to go to another bar open nearby. एक रिक्शा में बैठ के हम निकल पड़े जनता की तरफ. जनता जानते हो तुम लोग? नहीं, हाँ, नहीं, yes, yeah, there we go. No? You're 20. Why do you know Janta? Go home and study for your CA finals. तो हम पहुंच गए जनता की तरफ. And when we reached, we realized जनता तो बंद है. Unhappy with the idea of leaving each other, we decided to go to another bar open nearby. तो then हम रिक्शा से वाले पूछे कि भाई किधर जाना है, like where do we go? So he suggested that we go to Kalina. Now I am a sober kid. Yes, judge me as much as you want, but I am very opposed to crossing the Bandra threshold at 2 a.m. But at that moment, even though I was 14 kilometers away from where I lived, I felt at home. And I did not hesitate before saying, "Challa, let's do this." The entire rickshaw ride to the bar, we were caught up in conversation and did not realize that the 2 balloons suddenly flew out. Ab jitna bhi filmy ho, I stopped the rickshaw, ran across the road, almost died crossing and getting ran over by 2 cars, but I made sure I got Gulabo and Narang back safely. We reached the bar and quickly decided against sitting there क्योंकि हमने बोला ये हमारा vibe नहीं है. Now stuck in the middle of Santa Cruz East at 2 a.m., we did not know what lied ahead, but we just knew that this could be the end of the night. Thinking about what to do next, she looks at me and asks, "Hey, मेरे terrace चले क्या?" I would be an idiot if I said no. तो रात के 2:30 बजे हम एक दूसरा रिक्शा पकड़ के उसके बिल्डिंग पहुंचते हैं. We take the keys for the terrace and make our way up. We climb over the railing and sit down at the edge of a terrace with the ceiling and the rest of Bombay at our feet. The lights of our city reminded us why it never sleeps, and the serenity in the environment set up a perfect moment for me to look at her and say, "Hey, this feels weirdly safe." Even though we're sitting on the 15th floor at the edge. But it felt safe, yeah. बाकी की रात क्या, हम दोनों ने किशोर कुमार के गाने गाए, एक दूसरे को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लग गए. I asked her for a dance, and right there at 3 in the morning on her terrace with the stars above us, we danced to one of my favorite songs. एक लड़की भीगी. अब मुंबई में ना, stars are never visible in the night sky. You guys agree? But that day, it felt like the stars aligned both figuratively and literally. She looked into my eyes, held my hand, and asked me to lie down for a bit just to look up at the sky. As I raised my arm around her to hold her, she gave me the tightest hug. She looks at me and says, "Wouldn't it be great if this feeling lasted a bit longer?" आप लोग ने कभी पिज्ज़ा खाया है? हाँ? Have you guys gone on vacation and for 7 days had junk food? Yeah. लेकिन 8वें दिन पर दाल चावल खाने का मन करता है. That first feeling of comfort, that first fight of safety, that first feeling of home is what I felt being with her that night. Lying down, हमने नोटिस ही नहीं किया था कि कब सुबह के अब 4 बज गए हैं.
and I think it was time to get home. But this is India. यहाँ बाय बोलने में भी 30 मिनट लगते हैं. I did not want to leave, and I knew she wanted me to watch the sunrise with her, but we had to. Because sometimes it isn't the quantity of time that you spend with someone, but the quality that matters the most. मुझे लगा कि हम आराम से 12 साढ़े 12 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, but there I was standing with her on top of her terrace at 4:30 a.m. not willing to leave. As the birds started to sing and we started to see a little bit of light, I knew I had to get home before my parents woke up. तो दिल पे पत्थर रख के मैंने एक ऊबर मंगाया and I asked her for one last dance. अब मुझे नहीं पता कि वो फीलिंग क्या है. I do not know if it was the fact that I felt happy about the day that I was having, or was it just being around her in that moment, or was it something at that time more than friendship. But all I knew was that even if that moment did not amount to anything in the future, or even if our future at that time did not exist, I would be okay. Because I will capture and cherish that night for a very long time. We're never promised a tomorrow, correct? You guys agree? Yeah. We never promised a tomorrow, only promised a today. So like they say, every moment is a gift. Cherish it. Enjoy it. क्योंकि क्या पता. That's also my show, guys. Thank you very much. Thank you very much. Are we ready? I give a little senti, emotional, sorry, but it's also titled Kya Pata Kal Ho Na Ho. Is also my storytelling show, which is happening on 16th of July, 4 p.m. Habitat Studios, Sunday, right here. Tickets on Book My Show and my Instagram bio, so don't forget to buy it. Are we ready for our next act? Keep it going. Thoda aur zor se, guys. Come on. There's only a few acts left. Give it up for Sonal. Keep it going, keep it going. Until she comes on stage, I'll stand here. Clap for me. Ready? Yeah, give it up for Sonal, guys. परछाई भी मैं, आधार भी मैं, कभी शून्य तो कभी फनकार भी मैं, कुंजल रखूं नाभि में, ढूंढूं उसे जार जार वो भी मैं. Hello everyone, I am Sonal. So I've been writing for a few years, and writing comes as a very healing process for me, you know. So today I'm bringing up, I would say, a piece on mother. It is named as, am I audible to all of you? Yes. So the piece is known as an open letter from an unborn mother. So you heard it right. It's unborn mother. So, you know, I mean, I believe that we women have this inherited quality of motherhood, you know. I mean, it's definitely our choice to be a mother or not to be a mother, but not being able to be a mother doesn't make a woman any less of it, you know. So the piece is about it. So, you know, I mean, here it goes that कहते हैं तुम्हारे जन्म के साथ एक माँ का भी जन्म होता है. कहते हैं तुम्हारे आने से स्त्री को संपूर्ण प्राप्त होता है. जहन में कुछ नाम सोच रखे थे तुम्हारे लिए, जहन में कुछ नाम सोच रखे थे तुम्हारे लिए. बहुत खूबसूरत बचपन मैंने देखा है, बहुत खूबसूरत बचपन मैंने देखा है. उससे भी अच्छा सोच रखा था तुम्हारे लिए. कुछ खिलौने जो मुझे ना मिल सके थे, तुम्हें दिलाने का संकल्प कर रखा था तुम्हारे लिए. कुछ किताबें छांट रखी थी पढ़ने के लिए तुम्हारे लिए. कुछ खिलौने जो मुझे ना मिल सके, तुम्हें दिलाने का संकल्प कर रखा था तुम्हारे लिए. जब तुम अपना पहला कदम बढ़ाओगे, जब तुम अपना पहला कदम बढ़ाओगे, हमेशा पीछे खड़ी मिलूँगी, ये विश्वास दिलाऊंगी. जो भी तुम चाहो,
जो भी तुम चाहो वो बन सकते हो, ये आत्मविश्वास जगाऊंगी। थैंक यू। खुशियाँ और शांति हमेशा तुम्हारे अंदर है। खुशियाँ और शांति हमेशा तुम्हारे अंदर हैं, ये बात समझाऊंगी। और नैतिकता से सरल कोई उपाय नहीं, नैतिकता से सरल कोई उपाय नहीं, ये जीवन पर्यंत करके सिखलाऊंगी। थैंक यू। सोचा इतना कुछ हुआ है, सोचा इतना कुछ हुआ है, देखो देखो मैं तुम्हें अपने सपनों से बाहर ला ना सकी। और कारण कुछ भी रहा हो, कारण कुछ भी रहा हो बच्चे, मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हारी माँ बन ना सकी। पर अब तुम और इंतज़ार न करना, पर अब तुम और इंतज़ार न करना। जो भी माँ तुम्हें अपने एहसासों से निकाल इस जहाँ में ले आए, तुम उस माँ की कोख को नवाज देना। Thank you. और मैं वादा करती हूँ कि हम मिलेंगे, मैं वादा करती हूँ कि हम मिलेंगे, इस जन्म में ना सही किसी और जन्म में। तुम्हारी अजन्मी माँ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। Guys, keep it going. We having okay time? Yeah. You guys still alive? Yeah. With me? Yeah. Promise? Yes. With me? First time you're attending a poetry open mic? Yeah, first. How are you liking it so far? Really liking it. You don't have an option but to say that. No, actually, I really like writing. I write poetry, but I never had the confidence to put it out there. आज perform करना है? Because I feel like it's something really No, fair enough. personal. Just asking. How long have you been writing for? 3 years now. 3 years. Nice. But Nice. it's something that's just my own. I keep it to myself. It's a great form of expression. So that's beautiful. We ready for our next performer? Yes. Yes. My man! Guys, can we have a huge round of applause and welcome on stage, Faizan. बहुत शुक्रिया आश। कैसे आप लोग? बहुत बढ़िया। बहुत ज़माने बाद इतनी सारी अंग्रेज़ी एक बार आई है मेरे पास, तो बड़ा वक्त लगा मुझे समझने में। तुम्हारे साथ कई बार ऐसा होता है ना कि हम साथ रहते हैं बट पता नहीं चलता है। तुम्हारे साथ ज़माने भर का दुख रोएंगे हम भी, तुम्हारे साथ रोएंगे ज़माने भर का दुख हम भी, मगर ये एक सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा। एक शेर के साथ आगे बढ़ रहे हैं और एक नज़्म जो मैं लाया हूँ आप सबके लिए, वो नज़्म संभालना। एक अजीब से कुछ सवालात हैं जो जहन में रहते हैं हमेशा से। ये कैसी आरज़ू मेरे जहन में तैरती है अब, ये कैसी आरज़ू मेरे जहन में तैरती है अब, ये कैसा फ़लसफ़ा है जो मुझे बेचैन करता है। ये कैसी आरज़ू मेरे जहन में तैरती है अब, ये कैसा फ़लसफ़ा है जो मुझे बेचैन करता है। ये कैसी ख्वाहिशें हैं जो कभी पूरी नहीं होंगी, ये कैसी ख्वाहिशें हैं जो कभी पूरी नहीं होंगी। भला कैसी दुआएं हैं जिसे मौला नहीं सुनता, भला कैसी दुआएं हैं जिसे मौला नहीं सुनता। ये कैसी नमाजें हैं जिसे तकदीर में ही बस कज़ा होना ही लिखा है, फ़ना होना ही लिखा है। ये कैसी नमाजें हैं जिसे तकदीर में भी हंस कज़ा होना ही लिखा है, फ़ना होना ही लिखा है। क्या मेरे आंसुओं की अब कहानी रायगानी है, क्या मेरे आंसुओं की अब कहानी रायगानी है, क्या रायगानी ही मेरी असली कहानी है। ये कैसा खौफ है जिसके बदन पे खूब कांटे हैं, ये कैसा खौफ है जिसके बदन पे खूब कांटे हैं। ये कैसा शख्स है जिसके गले में लाश टंगी है, ये कैसा शख्स है जिसके गले में लाश टंगी है। ये चाहत है भी कैसी जिससे बस सांसें उखड़ती है, ये चाहत है भी कैसी जिससे बस सांसें उखड़ती है। तुम्हारे बाद क्या सब कुछ फना हो जाएगा मुझसे, तुम्हारे बाद क्या सब कुछ फना हो जाएगा मुझसे। तुम्हारे बाद क्या मैं गुमशुदा हो जाऊंगा जाना,
ये कैसी आरज़ू मेरे जहन में तैरती है अब। बहुत शुक्रिया। एक और छोटी सी नज़्म वो मैं चाहता हूँ सुनाऊँ। तो इस नज़्म का जो बैकग्राउंड है वो आज तक अभी दिया नहीं है मैंने, लेकिन अभी भी नहीं दूंगा। बट थोड़ा सा ये है कि बहुत आसान लफ्ज़ों में एक फरियाद है जो बहुत अहम है मेरे लिए। बहुत आसान लफ्ज़ों में सुनना। तुम्हारे साथ था तो सब मुझे आसान लगता था, तुम्हारे साथ था तो सब मुझे आसान लगता था, मेरी सब नज़्म का बस ज़िंदगी उन्वान लगता था, मेरी सब नज़्म का बस ज़िंदगी उन्वान लगता था। तुम्हारे पास था तो खुश मिजाजी आराइयाँ भी थीं, तुम्हारे पास था तो खुश मिजाजी आराइयाँ भी थी, मेरे अंदर बहुत अंदर गहराइयाँ भी थी। मेरे जब दोस्त आते थे बहुत हंस करके मिलता था, मेरे जब दोस्त आते थे बहुत हंस करके मिलता था, उन्हें बस देर तक सुनकर मैं गोया खूब खिलता था। मैं घर पर वक्त बेवक्त ही सही पर फ़ोन करता था, मैं घर पर वक्त बेवक्त ही सही पर फ़ोन करता था। तुम्हारे साथ होने से मैं पैदल खूब चलता था, तुम्हारे साथ होने से मैं पैदल खूब चलता था। सुबह की रोशनी दिन की तपिश महसूस होती थी, सुबह की रोशनी दिन की तपिश महसूस होती थी, तुम्हें बस सोच कर ही रात भी महफूज होती थी। तुम्हारे साथ होने से ख्वाबों की भी आमद थी, तुम्हारे साथ होने से ख्वाबों की भी आमद थी, कि जिसमें बस तुम्हारी ही खुशामद थी, खुशामद थी। सुनो जाना, सुनो जाना, तुम ही ऐने अयाने हकीकत हो, एसेंस ऑफ रियलिटी। सुनो जाना, तुम ही ऐने अयाने हकीकत हो, नज़र से दूर मंजर का सरो सामाए सरवत हो। तुम्हारे पास था तो मेरे फ़न ताबीर में आए, तुम्हारे पास था तो मेरे फ़न ताबीर में आए, तुम्हारी एक खुशबू से वो मेरे सामने आए। तुम हकीकत थे तो दुनिया खूबसूरत थी, तुम हकीकत थे तो दुनिया खूबसूरत थी, मैं दुनिया की ज़रूरत था, तुम मेरी ज़रूरत थी। मैं दुनिया की ज़रूरत था, तुम मेरी ज़रूरत थी। मैं किस हाल में हूँ ये मेरा मौला ही जाने है, मैं किस हाल में हूँ ये मेरा मौला ही जाने है। मेरे अंदर वहशत ही वहशत के फसाने हैं, मेरा जो हाल है, मेरा जो हाल है वो अब बेहाले हालत है। ना रब्त ही कहीं है ना ज़रिया निस्बत है, मोहब्बत सब्र है मेरा, मोहब्बत सब्र है मेरा, अदम औकात है मेरी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ यही बस ज़ात है मेरी। मैं मोहब्बत करता हूँ बस यही ज़ात है मेरी। क्या लाइन है यार। सी दिस इज व्हाई इतना दर्द है। सो क्यूट, वेल डन, लवली, राउंड ऑफ अप्लॉज। We ready for our next act? Yeah, your friend has come or no? Let's do. You were supposed to go second. By the way, I've been waiting. like आएगी अभी प्रेरणा के दोस्त भेजेंगे अब इसको। रौनित का दोस्त आ गया। You sure? He missed his chance. अरे उसको रिकॉर्डिंग भेज दे यहाँ पे लाइव है ना। वो भी मैं भेजने नहीं वाली। ओह एटीट्यूड, हाँ। You miss it, you miss it. Wow, what a wow. ठीक है, so can we have a huge round of applause and welcome on stage Riddhi. I love catching people off guard. Prerna thought she's gonna go next. So Prerna goes, I'm not that simple. No. So give it up for Riddhi, guys. यार लास्ट टाइम की तरह आगे मत आ जाना हर्ष। नहीं प्लीज। ओके। सो आप में से कितने लोगों ने प्यार किया है? सबने, ठीक है। कितने लोगों ने फिर उस प्यार के वापस लौटने का इंतजार किया है? इसलिए तो पोएट्स बनते हैं हम। तो कैसे पता चलता है कि इंतजार करना जरूरी है भी या नहीं है? इंतजार नॉट इवन द ऑप्शन।
You just do it. एंड यू डोंट नो कि वो वापस आएगा नहीं आएगा, वो सही इंसान है जिसका इंतज़ार करना चाहिए हमें. जब हम अपने पुराणों में प्रेम कथाओं सुनते हैं तब पुरुष और प्रकृति का एक मूल्य रूप है, उसे अक्सर भूल जाते हैं, शिव और शक्ति. कहते हैं कि शिव बिना शक्ति के शव है. सही है. एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें शक्ति ने बार बार जन्म लिया ताकि वो शिव का प्रेम प्राप्त कर सके, और शिव ने हर जन्म उनका इंतज़ार किया उसी प्रेम के लिए. तो प्रेम का एक मूल रूप है डिवोशन, श्रद्धा, जिसे हम इबादत भी कहते हैं. वो इबादत या डिवोशन तब होती है जब आपको ऐसे लगता है कि आपको उस इंसान के अलावा कहीं और कुछ दिखाई नहीं देता. लोग, समाज, सब दायरे अगर आपको अलग भी कर दे तो भी आपको पता है कि जो आपका खुद का एक हिस्सा है, जो आपके भीतर है, उसे वो चाह के भी अलग नहीं कर सकते. तो मेरे लिए वो इमोशन जो है, वो जो श्रद्धा है, वो ये है कि मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुमसे हूँ, और जब तक तुम हो तब तक मैं रहूँगी. क्या बात है, क्या बात है. तो आगे मैंने 2 पोइट्री लिखी है जहाँ पे मैंने अपना नाम रूमी बताया है. तो पहली पोइट्री है जहाँ पे मैं अपने जज्बात बताती हूँ, और दूसरी जहाँ अगर वो इंसान मुझे कहता तो क्या कहता. क्योंकि ऐसा मैंने एक इंसान पाया है जहाँ पे मुझे वो डिवोशन, मुझे वो श्रद्धा मिली हम दोनों के प्यार में. ओके. मैं अपनी नहीं, मैं उसी की हूँ. मैं दिखती अलग, मैं उसी में हूँ. मैं रूप में अलग, एक स्वरूप में हूँ. मैं आरंभ हूँ उसका, मैं ही उसका अंत हूँ. मैं उसका प्यार, उसकी नफ़रत भी हूँ. मैं उसकी हिम्मत, उसकी कमज़ोरी भी हूँ. मैं उसकी हंसी में हूँ, मैं उसके आंसू में भी हूँ. मैं उसकी उम्मीद और उसके नाउम्मीद में भी हूँ. मैं उसकी ताकत हूँ और मैं उसका डर भी हूँ. मैं उसकी दोस्त हूँ और मैं उसकी प्रेमिका भी हूँ. मैं उतनी उस जैसी हूँ कि मैं उससे अलग भी हूँ. मैं उसके सांसों में हूँ और उसके बीच की खामोशी में भी हूँ. मैं उसकी चैन और उसकी बेचैनी में हूँ. मैं उसकी बातों में और उसकी चुप्पी में हूँ. जब महसूस कर पाओगे प्यार की सभी रूपों को, मैं उसी की हूँ, मैं उसी में हूँ. तो मेरी सेकंड पोइट्री जब स्टार्ट होती है कि मैं भी तो स्वयं ही रूमी हूँ. तेरी खिलती हुई हंसी में हूँ, तेरी हंसी के पीछे की उदासी में भी मैं हूँ. जब प्यार से देखती है मुझे, उस नज़र में मैं हूँ और उस नज़र के पीछे का प्यार भी मैं हूँ. तेरी लबों की नरमी भी मैं हूँ, लबों से निकलता हर वो शब्द भी मैं हूँ. तेरी बिखरती जुल्फ़ें भी मैं हूँ और वो छोटी सी जुल्फ़ जो तेरे चेहरे पे आ गिरती है वो भी मैं हूँ. तेरा साहस हूँ मैं और साहस के पहले का डर भी मैं हूँ. तेरे आंसू हूँ मैं, तेरे आंसू के पीछे के जज्बात भी मैं हूँ. तेरे श्रृंगार की वजह हूँ मैं और उस श्रृंगार की खूबसूरती भी मैं हूँ. तेरी नाजुक कलाई हूँ मैं और उस कलाई की ताकत भी मैं हूँ. तेरा हौसला हूँ मैं और तेरे हौसले के पीछे की प्रेरणा भी मैं हूँ. उस शक्ति का शिव हूँ मैं और उस शक्ति का नमन भी मैं हूँ. कौन कहता है हमें अलग? मैं भी तो स्वयं ही रूमी हूँ. मैं भी तो स्वयं ही रूमी हूँ. एक आखिरी लाइन कि खुद को तबाह करने चली थी मैं इश्क में. खुद को तबाह करने चली थी मैं इश्क में. जानती थी मेरा यार मुझे हर हालत में सलामत रखेगा. Sorry, I have to just follow some rules that Habitat Studios set. आपने 5 मिनट ले लिए. अरे वो पहला पीस मेरे 5 मिनट सुपर हो, कभी नहीं होता है. बहुत सोच. लेकिन टाइम 4 मिनट का है, तो टाइम करके आइए. We are not. So good luck on getting a slot next time. I'm serious because this has happened before. People have exceeded time. Like if you exceed like a lot, then there's a like you get a slot a lot. It's like you can keep trying. Like 7-8 months later, you'll get it. So तुम्हें yes मिला.
मैंने सबको हेड्स अप दे दिया था ना पहले ही, राइट? आई गिव एवरीवन अ हेड्स अप, राइट? बिफोर द थिंग, राइट? या मेरे को डीएम मत करना, मैं बस यही बोल रहा हूँ। चादर में जाऊंगी। बहुत जरूरत है चादर की। It's chilling. Yeah, I know. Habitat has two extremes. Yeah, Habitat is either get too hot or too cold. That's why I either wear full sleeves and gum or I wear a hoodie. I carry a hoodie and gum. पैर कांप रहे थे मेरे। Nervousness थी। नहीं, ठंडी। चंदू, It's getting quite cold actually. हाय क्या बोल रहा है? ठंडी है। बाय बाय। हाँ जाइए ना, कोई टेंशन नहीं। We ready for our next act? We just got a few 4-5 people, and then I will record a piece. So उसके लिए I need everyone to act, because if it's not good also I want y'all to snap, क्योंकि ये reel पे जाएगा। तो थोड़ा just like be like, oh wow, what a wow, अरे beautiful Shakespeare तू ही है, like that types. Okay, cool. That'll happen later. But we ready for our next act? Yeah. So can we have a huge round of applause? Yeah. Can we keep it going? Keep it going. Keep it going. Keep it going. ऐसे नहीं बुला रहा मैं. Keep it going for inspiration, प्रेरणा. हेलो एवरीवन। नमस्ते। हम लोग सब भूल गए हैं ना नमस्ते। मैं भी भूल गई हूँ। खैर काफ़ी वेट कराया मैंने, सो सॉरी। आपके दोस्त को बोलना चाहिए। उसकी तरफ से सॉरी। सो मैं स्टार्ट करूँगी एक बहुत छोटे 2 लाइनर से जो मुझे बहुत पसंद है। बहुत पहले लिखी थी मैंने ये, मुझे याद भी नहीं कितना पहले, पर मुझे उस समय समझ में आया ये कि हम ज़िंदगी जीते जीते ज़िंदगी क्यों जी रहे भूल जाते हैं, और फिर हम वही करने लगते हैं जो करवाया जा रहा है। लाइक वी फॉरगेट लाइक दिस हियर इज़ एन इंडिविजुअल लिविंग इन अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड द नेचर। तो नशे नशे में धुत हम नसीब को संवारते, नशा किया तो गिर पड़े, नसीब क्या संवारते। तो मैंने ना प्यार भी किया एक आधी बार, फेल्ड सेवरल टाइम्स। खैर कोई नहीं, बट मैं ज़्यादा ज़िंदगी पर लिखती हूँ। आई थिंक इमोशंस मेरे कुछ ज़्यादा ही हाइटेंड रहते हैं हर टाइम। तो ऐसे एक बार हुआ, मैं घर में बैठी थी अपने, विश्वकर्मा पूजा का दिन था, ठंड जब आ रही होती है उस टाइम, और बाहर मैंने ऐसे सुना, मैं वेस्ट बंगाल में थी उस टाइम, माय डैड्स ट्रांसफ़र एट दैट प्लेस पोस्टिंग, और वो बोल रहा था फुलेर माला लीन, और जैसे वो मेरे खिड़की से गुज़र रहा था, ये उसकी पुकार तो सुनाई काफ़ी देर से दे रही थी, जैसे वो मेरी खिड़की से गुज़र रहा था उसका ओह सुनाई दिया मुझे। मैं उठ के देखने भी नहीं गई, क्योंकि ऐसे हॉकर्स रोज़ आते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में बिज़ी रह कर भूल जाते हैं कि शायद वो काम कर रहा है और शायद वो थक रहा है। वो चला गया, पर ये थॉट ने मेरे दिमाग को छोड़ा नहीं, और सोचते 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 मैंने लिखी कविता माली। मैं अपने फूल बेचता हूँ, कभी थकता हूँ तो रुकता हूँ, मैं प्यासा ही भटकता हूँ, मैं अपने फूल बेचता हूँ। कोई खरीदे राह चलता हूँ, आने जाने वालों से आशा रखता हूँ। कोई खरीदे राह देखता हूँ, आने जाने वालों से आशा रखता हूँ, नहीं दुकान नहीं सड़क पर ही हूँ, कोई खरीदे लंबी राहें चलता हूँ। निराश सा हताश नहीं हूँ मैं, मगर मेरे फूल मुरझा जाते हैं। मैं बूंद बूंद जीवन थामता हूँ, वो हर कदम झुलस जाते हैं। फिर और रस बांधता हूँ, फिर और रस बांधता हूँ, फिर और रस संभालता हूँ, ज़रा और आशा बांधता हूँ, सोचता हूँ फूल ही हैं औलादे नहीं जो हिम्मत हारता हूँ। फिर और रस संभालता हूँ, ज़रा और आशा बांधता हूँ, सोचता हूँ फूल ही हैं
औलादे नहीं जो हिम्मत हारता हूँ। साहब मैं सच कहता हूँ, साहब मैं सच कहता हूँ, मैं अपने फूलों का गवाह हूँ। खुद ही इन्हें रोपता हूँ और मजबूर हूँ सो बेचता हूँ। मैं फूल बेचता हूँ, अपने आंगन से लाता हूँ। यही जीवन है, बेच देता हूँ, मैं अपने फूल बेच देता हूँ। क्या बात है। अब जब मैंने सोचा था बिना फ़ोन खोले सुनाऊंगी, पर जब खुल गया है, ओह टाइम नहीं है मेरे पास। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम गाइस, थैंक यू सो मच। Inspiring. थैंक यू। Good one, na? Thanks. Are we ready for the next act? Yeah? So the next person I'm about to call, she's a dear friend. I've seen her perform for years. Not years, actually, year. She's a brilliant spoken word artist. And I think she's doing a piece on something that she's never performed on, like, not performed many times on before. Her name, उनका नाम एक्चुअली मैं हिंदी में कहूँगा, उनका नाम है जिनकी सिहाई से बहुत लोग ने लव स्टोरियाँ लिखी है. So please give it up for Kajal Advani, guys. Did you get it? Did you get the reference? Did you get the reference? Yeah, guys, give it up for Kajal. Hi. My name is Kajal Advani. I'm a writer and a spoken word artist. And वो जोक के बाद मैं क्या बोलूँ मुझे But I'm happy he said that joke because today I'm performing about love. I am not a love poet. I don't perform about love. Like, I think I'm performing about love after like 2 years. And it's not exactly about love. It's more like about dating apps. Any of you on dating apps? No? Okay, awesome. Yaar, audience sahi hai. Because my thing is also about that. I don't hate the concept of dating apps. I just don't think they are for me. I am a romantic person. An old school romantic. See, I don't have a partner or a lover, but I believe in love. And I want to fall in love. I want to meet someone who makes me laugh so hard I blush. Someone who I can talk to, hopefully about art. And we talk so long, our chai has a strong layer of malai. And I know how I want to meet this person. Old school romantic style. My dupatta getting stuck in his watch. Too cliche, maybe. Eyes finding each other from opposite ends of the room. Perhaps the room is an event about art? Sounds about right. Perhaps a chance meeting where a friend introduces us. Perhaps we bump into each other and our first words are an apology. Sorry, but you're stuck with me. I am an old school romantic and I'm a bad texter. In fact, I am terrible. My notifications are off. And if my friends have an emergency, they know they can't depend on me. Because I never pick up my phone. I often hate technology. So how can I find love on a dating app? An app where you know nothing about me. You see, I am great at hiding how I feel. So what if I text you all flirty, but in reality, I'm a crying mess? What if when we meet, we don't hit it off like we were supposed to? And I told you, I'm a terrible texter. I will forget to reply to you. How can I fall in love on an app whose notifications I will switch off? You know, they were on today just because I was trying something new. Let's say I found you. I found you and you're cute, you're smart, you make me laugh and blush, and then you ask for my number. This wasn't supposed to happen. I wasn't supposed to feel like this. You see, you are a great person, and I'm sure we would be cute together, but I would hate for we met on a dating app to be our story. I grew up on Romeo and Juliet, on Astrophil and Stella, on Phil and Claire Dunphy. I deserve a romantic story. And technology doesn't fit my idea of romantic. Perhaps I'm missing out on a potential partner. But I'm an artist first and a person later. I'm an old school romantic. I don't want to break every time I tell a story. Poetry is my everything, but I love stories too. How must I write a story whose premise is dating apps?
How must I write our story, my love story, when I don't bump into someone? I'm afraid I won't be able to do it with technology. My heart is too wrapped up in the old idea of romance. So when I download an app, I stare at my phone for long. I keep the notifications on, already not acting like myself. I select my best photos while sitting in old shorts and uncombed hair. And I know, when I return to tomorrow, when I return to a day of normalcy, I will feel pestered by that app and I will delete it. Perhaps, plus, the old school romantic in me tells me to let love happen. Don't go looking for it. Let love be natural. Let fate play the chance. And on a dating app, I am playing the role of fate? That doesn't seem right. I know I am made for love. We are all made for love. But I don't think I'm made for dating apps. Thank you. सुपर गाइस ब्यूटीफुल. अब थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? 2 लोग बाकी है, लेकिन उसके पहले मैं एक मुझे एक रील रिकॉर्ड करनी है. तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो आई एम गोना डू अ पीस एंड अगर आपको थोड़ा पसंद आए तो स्नैप कर देना, नहीं आया थोड़ा भी स्नैप कर देना, थोड़ा रिकॉर्डिंग में अच्छा आएगा, ठीक है? This piece that I'm about to do is titled Selfish Actions. Selfish Actions. So I've done a piece very recently and uploaded on Instagram, and it had touchwood done really well. It was titled Introspecting Within. It was in a piece because I believe that every relationship is not perfect. Every relationship has its ups and downs. Every relationship has its differences. And at the end of the day, nobody is perfect, right? Nobody's perfect. Yeah? You remember that line? Yeah? No? You're too young? No? Okay, cool. So, I was in a relationship a while ago. Like 2 years ago, this relationship ended. It was a 6-year-long relationship. And I'd done a piece. And I'd written this piece because I realized that... our breakup was mutual. We mutually decided कि मैं चूतिया हूँ. We ended it. और मैं निकल गया. And I had written this piece because I realized that there were some actions that I had done that was selfish of me. Is the door open? Can you shut it? Thank you. Because recording में आएगा. Namrataji, please, I request you not to record this piece because I'll be uploading it on my Instagram. So I just no recording apart from the thing. Sorry, ma'am. But because I'll be recording this for myself, so sorry about that. Because I realized that there were things that I unintentionally did that hurt her. And because every relationship you realize that when you break up, you're like, fuck yaar, kya ladki thi yaar meri, you know? And then when you introspect within, you're like, nahi bro, main bhi chutiya tha. And then when you introspect more, you're like, fuck, ye relationship puri duniya hi chutiya hai bro. So I'd written this piece on that. It's a very short piece. It's like a 15-20 second piece. So abhi thodi 15-20 seconds ke liye acting karni hai aapko. ठीक है? So it's titled Selfish Actions. It might not be easily again करेंगे. Take 2. Selfish actions. It might not easily be conveyed via words what exactly is that I want to say. I'm trying really hard, but I fail to form sentences that clearly mark out my way. Kept you in darkness and misery for way too long, and I know that you hit your lowest. It's unfair on your mind that I played with it so hard, but you kept being my side. You were my closest. Never gave me anything but support. Never gave me anything but support, but I found a way to hurt you through. How am I supposed to live with the fact that I did this to you? I wake up every night trembling with sweat, hoping that it was all a dream. But reality hits when I realized that I've lost the will to scream. Thank you. So, हमारी second last artist जो आने वाली है, वो psychologist है, poet है, writer है, actor है, nutritionist है, dietitian है, सब है. So, give a huge round of applause.
And welcome on stage, Namrata ji. Keep it going until she comes on stage, guys. And keep it going until she comes on stage. Come on. नमस्कार, मैं नम्रता हृदय नारायण मिश्रा साहसी। आज हमेशा ही स्पेशल रहे मेरे लिए। मेरा पहला अवेकन वर्ल्ड में जब ओपन माइक था तो थे, और वो मुझे लिखने की प्रेरणा भी डैडी से आई थी। और आज 15 साल हुए मेरी मॉम को गए, आज ही के दिन ही था। तो लेकिन ठीक है, तो मैंने उसके लिए एक छोटी सी लाइन लिखी थी। उसके बाद मैं अपनी कविताओं को लिखूँगी कि आज मुझे 15 साल बाद माँ तुम्हारी फिर याद आई है। आज मुझे 15 साल बाद माँ तुम्हारी फिर याद आई है। मैं क्या बताऊँ, मेरे साथ पूरी मुंबई रोई है। थैंक यू। मेरी कविता का शीर्षक है रूहेदारियाँ। जब भी हो दो रूहों में प्यार की साझेदारी, जब भी हो दो रूहों में प्यार की साझेदारी, उसमें से ना हो किसी का बड़ा पद, ना हो कोई बड़ा व्यापारी। दो रूहें जब मिलती हैं बंद कमरे के अंदर, दो रूहें जब मिलती हैं बंद कमरे के अंदर, दरवाजे पे छोड़ आना लिबास गुस्सा और अहम। दरवाजे पे छोड़ आना लिबास गुस्सा और अहम, यह भी होनी चाहिए तुम दोनों रूहों की ही जिम्मेदारी। जब भी हो दो रूहों में साझेदारी, उसमें से ना हो बड़ा पद किसी का, ना हो कोई बड़ा व्यापारी। थैंक यू। चूँकि मैं पेशे से साइकोलॉजिस्ट हूँ और ये मंथ भी है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ, सो सुसाइड इज़ अ बिग इशू इन आवर सोसाइटी। सो मुझे लगता है ज़िंदगी में हर इंसान के मन में एक बार तो आता है, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा लिखा था मैंने। ये प्रेरणादायक है, नेगेटिव नहीं है। इसका शीर्षक है आत्महत्या। जिस दिन तुमने सोच लिया कर लोगे आत्महत्या, उस दिन से समझो तुम स्वयं को मरा हुआ। मानती हूँ जो हुआ तुम्हारे साथ गलत हुआ, मानती हूँ जो हुआ तुम्हारे साथ गलत हुआ। खुद को एक मौका दो, क्या हुआ अगर जो तुम्हारे मन का ना हुआ। सब विचारों की ही अनसुलझी हैं कहानियाँ, सब विचारों की ही अनसुलझी हैं कहानियाँ। वास्तविकता में देखो तो जीवन है दूसरी चुनौतियों से भरा हुआ। तार्किक अतार्किक भय, रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक फियर। तार्किक अतार्किक भय को लिखो एक कागज़ पर, तार्किक अतार्किक भय को लिखो एक कागज़ पर, पाओगे कि मन है अतार्किक भय से भरा हुआ। जिस दिन से तुमने सोच लिया स्वयं को मरा हुआ, मार दो अपने अंदर की कायरता और अपनी इच्छाओं को, मार दो अपने अंदर की कायरता और अपूर्ण इच्छाओं को। क्या हुआ तुम्हारे साथ जो थोड़ा सा गलत हुआ। लो नया जन्म स्वयं, लो नया जन्म स्वयं खुद ही खुद की कोख से, लो नया जन्म स्वयं खुद ही खुद की कोख से। सवारो अपने आप को स्वयं ही अपने हाथ से। अब करो चुनौतियों का डट के तुम यूं सामना, अब करो चुनौतियों का डट के तुम यूं सामना। भर लो खुद को नई ऊर्जा के संचार से। करो शुक्रिया भगवान का जिसने दिया जीवन तुमको, करो शुक्रिया भगवान का जिसने दिया जीवन तुमको। जिस दिन से तुमने सोच लिया कर लोगे तुम आत्महत्या, उस दिन से समझो तुम स्वयं को स्वयं मरा हुआ। अब खुद की जान लेना तुम, अब खुद की जान लेना तुम, जीवन से कभी न खेलना तुम। अब खुद की जान लेना तुम, जीवन से कभी न खेलना तुम। पुरातन जो था वो चला गया, पुराना जो था वो चला गया। जो बचा है तुम में अब वो बचा नया नया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Let's keep it going. You guys still with me? Yes. Yeah. Okay. So, before we call on our next act, I also have 2 lines for y'all. बहुत पहले लिखी थी प्यार के बारे में, और अगर आपकी इजाज़त हो तो कि
थैंक यू। कि तेरी सूरत इतनी सोनी हर दीवाना तुझ पे मरता है। कि तेरी सूरत इतनी सोनी हर दीवाना तुझ पे मरता है। एक नज़र मुझ पे भी तो डाल पगली, ये मजनू भी तुझे अपनी दिल की बात कहने से डरता है। So with a round of applause, keep it going, keep it going, keep it going, keep it going. For our last act of the evening, Jaideep. Keep it going, keep it going, keep it going until he comes on stage. Such a sweet and wonderful host, Harsh. Can we have a big round of applause for him? Okay. नमस्ते, मेरा नाम है जयदीप। हाल ही में हमने घर चेंज किया, हम नए मकाम में शिफ्ट हुए। ठीक है, वो भी किराए पे था, ये भी किराए पे है। लेकिन होता क्या है ना, जब आप घर शिफ्ट करते हो तो आप वो सारी अच्छी यादें आपको माइंड में आने लगती है जो आपने उस घर में बिताई थी पिछले कुछ सालों में। तो मैं भी वही कर रहा था, हम अगले दिन शिफ्ट होने वाले थे। तो मैंने रियलाइज़ किया कि जितनी भी मेरी अच्छी यादें हैं, गुड मोमेंट्स, हैप्पी मेमोरीज, उसमें एक चीज़ कॉमन थी और वो थी मेरे कमरे की खिड़की। मुझे पता नहीं कितने लोगों को खिड़की से मोहब्बत है, लेकिन मैं थोड़ा वियर्ड हूँ तो मुझे है। तो मैंने कुछ लिखा था उसके ऊपर, आई होप यू लाइक इट। मेरे कमरे की खिड़की, देखता हूँ खिड़की के बाहर तो एक रंगीन दुनिया दिखाई पड़ती है। खुला आसमां, उड़ते पंछी, घने बादल और चांदनी रातें। वो पूरब से निकलने वाली सूरज की पहली किरणें और वो बारिश के मौसम में आने वाली गीली मिट्टी की खुशबू। देखता हूँ खिड़की के बाहर तो एक रंगीन दुनिया दिखाई पड़ती। वो मेरे सामने वाले मकाम में रहने वाली एक खूबसूरत लड़की, वो मेरे सामने वाले मकाम में रहने वाली एक खूबसूरत लड़की जिसे सजने संवरने का बहुत शौक़ है। आँखों में काजल और कानों में बाली लगा लेना तो कसम से पूनम का चांद भी शर्मा जाए। कभी कभी मैं सोचता हूँ शायद कह ही देता उसे मैं अपने दिल की बात। कभी कभी मैं सोचता हूँ शायद कह ही देता उसे मैं अपने दिल की बात। लेकिन आज समझ आता है कुछ कहानियाँ अधूरी ही खूबसूरत लगती है। वो मेरे खिड़की पे रखे पौधों को देखता हूँ तो ज़िंदगी में एक ठहराव सा आ जाता है। वो मेरे खिड़की पे रखे पौधों को देखता हूँ तो ज़िंदगी में एक ठहराव सा आ जाता है। बीज बोने से लेकर फूल खिलने तक का जो सफ़र है ना, वो ज़िंदगी के कई राज से कहा जाता है। वो हर सुबह मेरी खिड़की पे आने वाली गिलहरी अब मेरी दोस्त बन चुकी है। वो हर सुबह खिड़की पे आने वाली गिलहरी अब मेरी दोस्त बन चुकी है। घूरती है मुझे, कुछ बातें नहीं करती, शायद मेरी तरह वो भी काफ़ी इंट्रोवर्ट है। ये खिड़की अब मुझे आईने जैसी लगती है क्योंकि मेरे सारे ख्वाब, मेरा सुकून और मेरी खुद को समझने की खोज, ये सब मुझे उस खिड़की में दिखाई पड़ता है। सच कहता हूँ, ये खिड़की मुझे आईने जैसी लगती है क्योंकि ये खिड़की मुझे अपने आप से मिलाती है। Guys, keep it going for Jaideep. अब इस परफॉर्मर के साथ it marks the end of our open mic. I know it sucks, right? You guys are so good. So round of applause for every single person that performed today. Round of applause for Ronit, for Jigna ma'am, for Sonal, Prerna, Riddhi that's gone outside, Yashika, Namrata ji, Jaideep, Sahil bhai, Kajal, Riya, Vivian, Chandu, everyone that was a part of it. Keep it going for Vivian who helped us with the streams and the photographs. Chandu that helps us with the lights and the music. Before I go, I have 2 lines for you guys. आए तो थे दिलवाले बनके तुझे अपनी दुल्हनिया बनाने के लिए। आए तो थे दिलवाले बनके तुझे अपनी दुल्हनिया बनाने के लिए। तेरी शादी होते देख हम सब तो शायर बन गए अपनी दुख भरी कहानी सुनाने के लिए। Thank you guys, that's been my time. My name is Harsh Malhotra. You guys have been absolutely fantastic. Have a great